हाँ जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हो जी? ओके, तो मेरी आवाज आ रही है। फिर ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਟੁਡੇਜ਼ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਐਬਿਲਿਟੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਸਮ characterizations or some fundamental properties of differentiable functions or some fundamental theorems about differentiable functions. So first of all we will see what is a differentiable function. ठीक है, differentiability. A function f is said to be differentiable at a point c of its domain if this limit exists finitely. ठीक है जी, जो लिमिट लिखी है एग्जिस्ट करनी चाहिए। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ a function f ठीक है, a function f is said to be differentiable at a point c. नंबर 1 है कि जो पॉइंट है ये डोमेन का होना चाहिए। अगर ये जो लिमिट है this limit exists finitely then आप कहेंगे that this function is differentiable। और आपको पता है कि कोई लिमिट है ना, कोई पॉइंट पर लिमिट was at a point c of fx exists if and only if left hand limit at point c of fx is equal to right hand limit of the function at point c। सो ਉਹਨੂੰ यूज करते ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਸ characterization पर पहुंचते हैं कि अपना जो फंक्शन है that is differentiable if left hand limit of this function, this a जो फंक्शन है क्वोशिएंट फंक्शन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, if left hand limit of this function is equal to right hand limit of this function, और जो इस फंक्शन ਦੀ left hand limit है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ left hand derivative। ठीक है, और जो इस फंक्शन ਦੀ right limit है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ right hand derivative। So a function f is differentiable at a point c if and only if left hand derivative of the function is equal to right hand derivative of the function। Or there is one more characterization of differentiable at a point c, differentiable function at a point c. We say a function f is differentiable at a point c if and only if there is unique tangent to the curve। ठीक है जी, जेडे point c ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ suppose this is your function and ਇਹ ਆਪਣਾ curve y is equals to fx। ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ c ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ c ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਅਗਰ c, fc ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ, there is unique tangent at that point। diagrammatically good। ठीक है जी, this is the diagrammatically or graphically significance of the differentiability। अगर इतने कोई डाउट है तो प्लीज मैंने लाइव चैट दसते जाओ, आप रिपीट करते जावांगे। ठीक है जी, so let us move to our next point, some fundamental theorems of differentiability। Number 1, sum of two differentiable functions is differentiable। suppose इथे point c लिखना ना भूलियो, if f is differentiable at point c if f is differentiable at point c and g is also differentiable at point c, then function fx plus gx ये जो बनेगा it is also differentiable at point c। Similarly, if f and g are differentiable at point c, then fx minus gx is also differentiable at point c। Number 3, product। If f and g are differentiable at point c, then fx into gx this is also differentiable at point c। ठीक है, at point c, and fx by g this is also differentiable at point c provided that this thing is defined। It defined कदों होगी when gx is non-zero, so gx should be
non-zero everywhere. So these are some basic properties of differentiability. Number 2, composition of two differentiable functions is differentiable. Suppose f from a to b is a function and g from c to d is a function. Then function g naught f, it is a function from a to d if, है ना, क्या कंडीशन होती है जी कंपोजिशन दी, f दी जो रेंज है दैट इज f of b, ये डिफाइन किया ना, कंडीशन f of b is contained in c. ठीक है जी. तो अगर f डिफरेंशिएबल है c पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ, g डिफरेंशिएबल है f of c ਦੇ ਉੱਪਰ, then g of f ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ डिफरेंशिएबल at point c. Next is if fx and gx are both not differentiable, then fx plus gx may be differentiable. जरूरी नहीं है कि अगर fx ਤੇ gx differentiable नहीं है, then fx ਤੇ gx ਦਾ जो sum है वो भी differentiable ना होए. Similarly, if fx and gx are not both differentiable, then जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट जो है वो भी differentiable ना होए. मतलब fx ਤੇ gx ਦੇ differentiable ना ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ fx plus gx differentiable हो सकता है, and same fx into gx भी की differentiable हो सकता है. ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ एग्जांपल क्रिएट करांगे, लेकिन ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन देख आइए, then ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜੋ एग्जांपल ਹੈ ਇਜ਼ੀਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ. Then next we have is example of non differentiable function. So this is the different example of non differentiable function, that fx is equal to mod x, sorry, fx is equals to mod x is not differentiable at x equals to 0. ठीक है. और अगर तुसी जरूरी नहीं कि mod x की गल करनी है, x mod x minus a for any a is not differentiable at x equal to a. Is not differentiable at x equal to a. ठीक है. Now let us see why this function is not differentiable. Okay. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, when this limit exists, when this limit exist करे. अगर a ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨਾਈਟਲੀ, ठीक है, this is point a, then we say our function is differentiable. This exists finitely, ठीक है, then we say our function is differentiable. और ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ. ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਲੈਟ ਅਸ ਫਾਈਂਡ ਦਿਸ ਲਿਮਿਟ x ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0. ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ 0 of fx minus f0 upon x minus 0. Now f of 0 will be f of 0 कितना करेंगे ਆਪਾਂ a जो इक्वेशन ਦਿੱਤੀ फंक्शन ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ 0 ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ and mod of 0 is 0. ठीक है. So this comes out to be fx is equals to mod x. This is limit x going to 0 of fx, that is mod x minus 0 by x, and this is limit x goes to 0 of mod x by x. हाँ जी, ये लिमिट कितनी है जी? What is this limit? Just let me know in the chat box. हाँ जी, कितनी है जी लिमिट है? ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਿਗਨਮ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ. ਦਿਸ ਲਿਮਿਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟ 1 ਹੈ
ध्यान ਨਾਲ देखो जी ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ अपनी क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ जसवीर सिंह कह रहे ने 1 and -1 स्टडी सेंटर इज आल्सो सेइंग 1 -1 पर इन्नी गल याद रखो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है लिमिट यूनिक होंदी है किसी फंक्शन दी दो लिमिट्स किसी एक पॉइंट दे ऊपर नहीं हो सकदियां ठीक है जिन्हां नूं इहदे विच प्रॉब्लम आ रही है अपना लास्ट लेक्चर देखो इथे आपां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कीता है मॉड फंक्शन कीता है सिग्नम फंक्शन कीता है फ्रैक्शनल पार्ट कीता है उथे आपां कीता है दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट दिस लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है जी आप इन्हू कीता है डिस्कस अगर तुहानू कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टिल ध्यान नाल देखो इन्हू तोड़ो लेफ्ट हैंड लिमिट कड्डो आपां नू पता है फंक्शन लिमिट कदों एग्जिस्ट करदी है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो ठीक है जी सो इत्थे किदां कड्डांगे x नू पुट करो 0 h और एज x टेंड्स टू 0 h विल गो टू 0 सो एक लिमिट अपने को बन जाएगी लिमिट h गोइंग टू 0 mod x की जगह पे आ जाएगा अपने को -h अपॉन -h एंड ऊपर बन जाएगा अपने को h अपॉन -h एंड दिस इज -1 ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है राइट हैंड लिमिट भी कर दो राइट हैंड लिमिट लिखिए करेंगे लिमिट x गोइंग टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ mod x बाय x इथे की होएगा जी as x tends to 0 from positive sides h goes to 0 x ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ 0 plus h ठीक है जी तो बन जाएगा अपने को दिस इज लिमिट x goes to सॉरी लिमिट h goes to 0 लिमिट h goes to 0 ऊपर आएगा अपने को mod h by h mod h of h is h by h this is 1 so left hand limit 1 है right hand limit -1 है so these two limits are not equal so that's why limit exist नहीं करती और ये limit exist नहीं करती so that's why this function is not differentiable at x equal to 0 ध्यान रहे x equal to 0 ਦੇ ਉੱਪਰ function differentiable नहीं है बाकी हर जगह function जो है ये differentiable है ठीक है जी so एक बार इन्हों देखो इधर कोई प्रॉब्लम है प्लीज लेट मी नो अपन डिस्कस करते हैं दोबारा एंड जो भी अपना लाइव देख रहे हैं प्लीज अपने इस वीडियो ਨੂੰ लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल ਨੂੰ और बेल आइकन जरूर दबाओ ठीक है जी एवरीवन लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फिर अपन मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड ਦੇ ਉੱਪਰ एंड देखो अगर इथे कोई प्रॉब्लम है लेट मी नो ठीक है जी देखो इथे ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट and this is your right hand limit they are not equal so that's why this limit does not exist ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती अब पता है अगर अपन पता है लिमिट अगर एग्जिस्ट ना करे then अपना फंक्शन की दैट डिफरेंशिएबल नहीं होता so that's why this function fx is equals to mod x is not differentiable at x equal to 0 ध्यान रहे सिर्फ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन बाकी हर एक पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ ये फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल है ठीक है जी ठीक है ओके then let us move to our next slide relation between continuity and differentiability what we have next is relation between continuity and differentiability ठीक है ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ that even if fx and gx are not differentiable fx plus gx may be differentiable also even if fx and gx are not differentiable at c fx into gx may be differentiable okay ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੁੰਨੇ let us move to our previous slides okay what's the problem here
Okay, here we are. ठीक है, fx and gx are not differentiable, then fx plus gx may be differentiable. ठीक है, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ if f is differentiable then cf is also differentiable. मतलब अगर ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ then again ਉਹ differentiable ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ differentiability ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ fx ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ mod x। ठीक है जी, this is differentiable at every point except 0 and gx ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ minus mod x। this is minus mod x। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਬਲ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 0 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਨਾਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ mod x ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ fx gx ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ you will get fx plus gx is equal to, this will be mod x plus minus mod x, this is 0, so fx plus 0 is x, fx plus gx is a constant function and constant functions are differentiable। ठीक है जी, कि constant function आ गया ना, 0 function आ गया, ये पर लिमिट कटांगे ये वाली limit x going to c of fx minus fc upon x minus c, fx भी 0 है fc भी 0 है, numerator is identically 0, so this limit is 0, so limit exist कर दी पई है। so fx ਤੇ gx जो है ना उस 0 ਦੇ ਉੱਪਰ differentiable नहीं है, but fx plus gx जो अपने को function आया that is differentiable at, हाँ जी, that is differentiable at 0। Similarly here fx में ले लो mod x, this is not differentiable at x equal to 0, gx में भी चाहे mod x ले लो, this is also not differentiable at x equal to 0। then if you evaluate the product fx into gx, this is mod x into mod x, and this is what, this is mod of x into x, this is mod of x square and this is x square। easy, सब तो देख रहे हैं, this is x square। ठीक है जी, so x square is a differentiable function, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ fx is equal to x square is a differentiable function। ठीक है जी, क्योंकि fx is equal to x डिफरेंशियबल है, अपन पता है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट डिफरेंशियबल होता है अगर मैं x ਨੂੰ x ने मल्टीप्लाई करते हैं, so this is x square, this is also a differentiable function। ठीक है, so एग्जांपल्स अपने को इजीली क्रिएट हो गई हैं। ओके, देन लेट अस मूव टू हियर। f is differentiable at x equal to c, then f पक्का उस पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कंटीन्यूअस, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई पॉइंट कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कंटीन्यूअस है, जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होए। ठीक है जी, नंबर 1 पहला देखते हैं ਆਪਾਂ, अगर f जो डिफरेंशिएबल है c ਦੇ ਉੱਪਰ देन fx जो है वो कंटीन्यूअस रहेगा हमेशा c ਦੇ ਉੱਪर। f जो है डिफरेंशिएबल है c ਦੇ ਉੱਪਰ, सो वी कैन राइट लिमिट x गोइंग टू c of fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ठीक है जी, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, इन पर डिनोट कर दें कितना f डैश c दे नाल, क्योंकि डिफरेंशिएबल है, सो दिस लिमिट इज फाइनाइट, सो f डैश c इज अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, नाउ जस्ट ट्राई टू फाइंड दिस थिंग। ये क्या होगा, तो क्या करो, इन्हें x माइनस c ना मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज f डैश c। ठीक है, एंड x as x tends to c, this thing goes to 0, so f dash c into 0, so this limit is 0, means fx minus fc limit x tends to c is 0, and it implies limit x going to c of fx is equal to fc, it means function is continuous at x is equal to c।
ठीक है जी। Okay, I think this thing is easy. A differentiable function at a point C is also continuous at that point C, but the converse is not true. You may have a function which is continuous at a point but not differentiable there. हाँ जी, क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੋਏ? I think we ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। mod x, ठीक है, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ mod x। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ mod x जो फंक्शन है this is not differentiable at x equal to 0, ठीक है, बट अपन को पता है that mod x is continuous everywhere, so this is continuous at x equal to 0, ठीक है, this is an important example, ठीक है जी। mod x जो है ये continuous है x equal to 0 ਦੇ ਉੱਪਰ, इनफैक्ट हर एक पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ continuous है बट ये differentiable नहीं है जी x equal to 0 ਦੇ ਉੱਪਰ, ठीक है जी। then let us move to our next slide, okay, this one, ठीक है। ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਪਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਟੇਬਲ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਪਈ, ਕਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਦੱਸੀ ਹੈ, then ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਹੈਵ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਜੋ ਡੋਮੇਨ ਹੈ this is set of real numbers, ਇਹਦੀ ਕੋਡੋਮੇਨ ਹੈ ਵੀ set of real numbers and range is also set of real numbers। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ हर जगह कंटिन्यूअस है, हर जगह डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है जी। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ओके। देन स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होएगा, something like this, ठीक है। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ all नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स और रेंज भी दी क्या है all नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। लेकिन ये फंक्शन जो है हर जगह कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है जी जीरो के ऊपर, ठीक है जी। मैं एक गल दसदा चलना कि डिफरेंशिएबिलिटी ਲਈ कोई किसी पॉइंट का इंटीरियर पॉइंट होना बहुत जरूरी है। here zero is not an interior point, so ਇਹਦੇ पर ਆਪਾਂ डिफरेंशिएबिलिटी नहीं करते, ठीक है जी। this function is differentiable at in this interval, open interval 0 to infinity। 0 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 네ਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 0 ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ डिफरेंशिएबल नहीं है, और बाकी जितने भी पॉइंट्स ने डोमेन ਦੇ हर जगह डिफरेंशिएबल है फंक्शन। देखो ਇਹਦਾ आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल and its derivative is 1, and root x is differentiable function and its derivative is 1 by 2 root x। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, not differentiation, ਉੱਥੇ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है जी। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ n ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ n-1 ਐਂਡ n ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ n। ਸੋ these two limits are not equal, so this function is ਉਹਦੀ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ that differentiability implies continuity। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएबल तो पक्का कंटीन्यूअस होएगा। तो ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰਾਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, not continuous implies not differentiable। ਜੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂशिएबल ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, not differentiable। then बताए कि नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर अपना जो फंक्शन है वो कितना बिहेव करता है जी, कांस्टेंट वांग बिहेव करता है। सो जेडे जेडे पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है उत्थे दा डेरिवेटिव कितना होता है जी, 0 ही। ठीक है, नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर, एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स, एट नॉन इंटीजर्स। ठीक है, देन फ्रैक्शनल पार्ट ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਐਟ ਇੰਟੀਜਰਸ, तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। और बाकी पॉइंट के ऊपर समथिंग समथिंग आइडेंटिटी फंक्शन या ट्रांसलेट्स वांग बिहेव करता है, एंड द डेरिवेटिव फिर कितना आएगा 1 एट नॉन इंटीजर्स। जिथे एग्जिस्ट नहीं करता उत्थे एग्जिस्ट नहीं करता, एंड बाकी पॉइंट के ऊपर दा ग्राफ दा डेरिवेटिव कितना है जी 1। हाँ जी, आई थिंक इत्थे दा कोई प्रॉब्लम है किसी नू तो प्लीज पूछो सो दैट वी कैन डिस्कस। इस रूट एक्स इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, बिल्कुल कंटीन्यूअस है जी, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, ओनू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वेख के कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, अगर ओदी लेफ्ट विच पॉइंट नहीं है तो आप सिर्फ राइट हैंड लिमिट जी होंगी उन्होंने लिमिट कह देंगे। ठीक है जी, अगर किसी पॉइंट के लेफ्ट विच पॉइंट नहीं है तो आप लिमिट किनू कहने जो सिर्फ राइट तो लिमिट आ रही है। इतने राइट तो लिमिट निकल सकती है रूट के ना 0 के ऊपर, राइट हैंड साइड तो लिमिट आप इवेल्यूएट कर सकते हैं, दैट्स वाई इतने फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, ये देख के कंफ्यूज नहीं होना कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट दी एग्जिस्ट करती है। अगर लेफ्ट हैंड पॉइंट ही नहीं है डोमेन, देन सिर्फ आप राइट हैंड लिमिट की गल करते हैं। ओके जी, तो कोई है प्रॉब्लम इस तक अपन? तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है। तो आप कल मिलेंगे जी, आप इस टेबल को एक्सटेंड करांगे। ठीक है जी, कल की क्लास आप इस टेबल को एक्सटेंड करांगे, प्लस आप डिफरेंशिएशन के ऊपर पहुंचांगे, और आप मेनली करांगे द डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज, आई थिंक जो इजी ने, प्लस आप करांगे अपने मीन वैल्यू थ्योरम्स, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। वी विल से देयर फॉर्मुलेशन, graphical significance and the questions based on Lagrange mean value theorem and Rolle's theorem। ठीक है जी, सो कल के लेक्चर्स अपना करांगे। तो ठीक है जी, आप फिर मिलते हैं कल। एंड आल्सो प्लीज जिन्होंने फिलहाल तक अपना चैनल सबसक्राइब नहीं किया होया, प्लीज सबसक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करो। ठीक है जी, एंड थैंक यू सो मच।
थैंक यू।